Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are all right. And as always, me too. Here is Muhammad Tosif, your English teacher, signing in for today's lecture that is about lesson number 5, Daffodils, written by William Wordsworth. First of all, we would like to know about the poet. William Wordsworth was a 19th century literary stalwart and the most influential pioneer of English romantic poetry. He was born on 7th April 1770. Now we would like to know about the poem. The poem Daffodils is one of the loveliest and the best known poems of William Wordsworth. The poem was written in the year 1802 and it was first published in 1807. The very starting line of the poem, I wandered lonely as a cloud, informs the poet's profound sentiments of being left alone. Now we would like to know about the vocabulary as it will help us to understand the poet's words clearly. First word is wandered. Wandered means घूमना, सैर करना, and the synonym is roam. Lonely meaning तन्हा and the synonym is solitude. Floats किसी चीज़ का आसमान में बहना या घूमना, सिनोनिम इज ग्लाइड. एंड नेक्स्ट बेटा और, पर, ओवर. वेल्स मीनिंग वादी, सिनोनिम वैली. एडवांस अचानक, सिनोनिम सडनली. होस्ट हजूम. एट ग्रेट नंबर, बीनीथ नीचे, synonym under. Fluttering झूमना and the synonym is hover. Breeze हवा and the synonym is light wind. Okay, stanza translation. Stanza is a collection of lines in a poetry in sense of a paragraph. I wandered lonely as a cloud that floats on high or vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. I wondered, मैं घूम रहा था, lonely अकेले as a cloud एक बादल की तरह. एक दिन मैं तन्हा घूम रहा था जैसे एक बादल. That floats जो तैरता है, ऑन हाई और वेल्स जो वादियों में, जो ऊंची वादियों में, एंड हिल्स और पहाड़ियों में तैरता है, जो पहाड़ों और वादियों पर तैरता है. when जब, at all at once अचानक, I saw a crowd मैं एक हजूम देखता हूँ, जबकि अचानक मैंने एक हजूम देखा. a host एक हजूम, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स सुनहरी गुले नरगस का हजूम, बिसाइड द लेक झील के किनारे, बीनीथ द ट्रीज और दरख्तों के नीचे, झील के किनारे के नज़दीक और दरख्तों के नीचे. फ्लटरिंग झूमना, एंड डांसिंग और नाचना, इन द ब्रीज हल्की हवा में या सादा हवा में झूमना और हवा में झूम और नाच रहे थे. ओके बेटा, आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये जो लाइंस पढ़ी हैं इनको अपनी वर्डिंग में लिखना है और यही आपकी समरी के तौर पे यूज़ होगी. सो मोहम्मद तौसीफ साइनिंग आउट. स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग.